डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good afternoon. Myself, Dr. Nishal Rawal, would like to welcome you all at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. In the last sessions, we had talked about the environmental issues, natural resources, non-renewable resources and renewable resources. In today's sessions, we will be going to cover about the block 2, that is issues related to the environmental and the business. Unit 3, environmental issues, impact on the business. In this unit, we will be talking about the global warming, we will be talking about the Kyoto Protocol, we will be talking about the oil price impact and on business, oil crisis. We will be also talking about the various other problems of environment related to the business and how does it is going to be impact on our business environment. Once again, I would like to welcome you all. Let us start with the unit 3. This is the title of our today's topic, natural environment resource and environmental issues. Unit 3 will be environmental issues related to the business. Learning objective, as I said earlier, we are going to talk about the global warming, Kyoto Protocol, oil crisis and its impact on the business. We are also going to talk about the various problems related to the water resource and how this water resource is going to be managed. This also includes the industries, pollutions. Pollutions are of 3 types: air, water and noise pollutions. Let us continue with the first slide. Whenever we talk about the environmental issues, okay, so there are certain aspects, certain effects of with the business. The first one is the industrial waste, second one is the sustainable development of raw material, and the third one is the water and air emissions. Okay. Now, these are the issues will affect the business, as this required a law to change the equipments, procedures as to meet the imposed standard which involves much money in the business. ठीक है, इंडस्ट्रीज तो तुमने सेटअप कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट जब होता है तो उसको मैनेज कैसे करने का, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ लॉज शामिल किया गया है एंड इट इंक्लूड्स इट इन फैक्ट इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम आवर बिजनेस. सो ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, एक सिंपल सा थॉट माइंड में आता है कि कभी अनसीजनल रेनफॉल आता है तो हम उसको क्या कहेंगे. वी ऑलवेज से कि इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग. अनसीजनल रेनफॉल, हालांकि मई महीने में कभी बारिश नहीं होता है, लेकिन पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूस बारिश आती है, राइट. पिछले कुछ 4-5 साल से देखा जाए तो नवरात्रि के टाइम पर बारिश आती है, होती है, या बारिश की आशंकाएं होती है. एटलीस्ट पहले 1-2 दिन को तो ये रहता ही रहता है, ठीक है. सो ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो इज़ ए प्लेस इन जापान. एक ट्रीटी साइन किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने, कि हो सके उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम कम प्रोड्यूस करें. तो लेट अस सी इनटू द डिटेल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. तो सबसे पहले क्या आता है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है. सो इट रिजल्ट्स एज एन आउटलाइन गैसेस विच एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस इन द एटमॉस्फेयर. जनरली ये कहाँ फाउंड होता है, तो कि भाई सर्टेन लेवल्स होते हैं उसके नेचुरल रिसोर्स में, एंड एनवायरमेंटल इश्यूज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डेली और रूटीन लाइफ, ठीक है. अब ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स. विथ द इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, such gases increases into surrounding atmosphere and with the result of fossil fuel emissions. Moreover, CO2, carbon dioxide, not only an aggressive greenhouse gas, the large amount of it our atmosphere cause the global surface
टेम्परेचर्स टू इंक्रीज। ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। गर्मी कितना डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो कि भाई आज से 3-4 दिन के लिए 40 से 45 डिग्री तक रहेगा। ऑरेंज अलर्ट रखा गया है अहमदाबाद की मैं एक बात करूँ तो। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग। पहले हम इतने वार्म में नहीं रहते, अपने वहाँ पर गर्मी 35 से 40 तक जाता था, अभी 45-46 तक जाता है, राइट। वो तो पिछले कुछ दिनों से अपने वहाँ पर बारिश हुई थी 3-4 बार, इसीलिए ये इतना मेंटेन रहा है टेम्परेचर को। बट अगेन 48 तक पास्ट में गया हुआ है, 48 कुछ मिनटों के लिए 50 तक भी वो जाता है, ठीक है। सो CO2 की मैं बात करूँ तो इट कैरीज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एक स्टडी किया गया था, उस स्टडी में ये फाउंड हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड 80% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रहता है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हो सके उतना कम प्रोड्यूस करे और ग्लोबल वार्मिंग भी इम्पैक्ट उसकी कम हो, वो सबसे पहली अपना एक टारगेट रहेगा ताकि ह्यूमन बींग्स और बिजनेस को अफेक्ट ना करें। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाट इज दिस क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेशनल एक ट्रीटी साइन किया गया था जिसमें सारे देश के लोगों ने डिसाइड किया गया था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो यूज़ है वो हम कम कर देंगे। टोटल 150 नेशंस वेर देयर इन द ईयर December 1997. Lower emission of carbon dioxide and other greenhouse gases like methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, sulfur hexafluoride will result 5% low in the year 1990 to 2008 to 2012. ऑप्शंस टू रिड्यूस एमिशन इंक्लूड्स कि भाई टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, नेशंस क्रेडिटेड सिंक्स ला सकते हैं, ट्रेडेबल परमिट्स फॉर एमिशंस। अनफॉर्चुनेटली इट हैव सम डाउनसाइड्स impact, that is sometime it is a very less expensive to buy the permits than the decrease emissions, and there are no credits for conservation, even though existing forest contain 40% of the terrestrial carbon, and from 150 countries to currently we are having 166 countries जिन्होंने ये प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई किया गया है, ठीक है, मेंबर कंट्रीज जो है वो। यूनाइटेड स्टेट्स की मैं बात करूँ तो शुरुआत में उन्होंने ज्वाइन तो किया था, ये ट्रीटी साइन किया था, प्रोटोकॉल ज्वाइन किया था, लेकिन 2001 में उन्होंने अपना अननेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज लेने के लिए वो अपना नाम वहाँ से निकाल दिया था, एंड इट वाज बेनिफिटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, इनडायरेक्टली फॉर चाइना नाउ विच इज़ नंबर 1 ग्रीन हाउस एमिटर कंट्री। सबसे कम ग्रीन हाउस गैस चाइना में होता है। एंड जब हम डेवलपिंग नेशंस इंडिया और चाइना की जब हम बात करते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ आर प्योरली डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी रहती है, सो इंडस्ट्रीज़ होने के कारण डेवलपिंग भी है वो लोग, और डेवलप कंट्रीज से इनफैक्ट ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बट वो स्टिल डेवलपिंग है और उनका एक मेन सोर्स होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। So country like India and China don't need to require much to reduce their limit emission under the Kyoto Protocol. अगर करते तो वो अच्छी बात है, but not compulsory. US ने रेटिफाई नहीं किया प्रोटोकॉल क्योंकि बुश एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस दैट वुड हर्ट द US economy. Now after the global warming and Kyoto Protocol, let us talk about the oil crisis and its impact on the business. Generally, most modern industrial transportations, agriculture, industrial systems or relative low cost and high availability of oil causes oil productions to decline, and as a result in severe increases in the price of oil that will implicate a negative impact on the global economy. पूरे कंट्री नहीं बल्कि अगर हम वर्ल्ड का पूरा बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी पर ऑयल प्राइस कैसे इम्पैक्ट करते थे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स है, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट है, उनकी कॉस्ट भले ही कम होती है लेकिन वो रन करने के लिए वी रिक्वायर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल, एंड ऑयल प्रोडक्शंस वो जितना ज़्यादा करेंगे वो डिक्लाइन होता जाएगा, एंड इट विल बी रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑयल. Price increases, demand will automatically get
decreases, and it will be highly impact, or in fact negative impact will be there on the global economy. Predictions were greatly as what exactly such negative effects results. Whenever we talk about some political or economic changes, reactions to the high price and the shortage instead of reactions to threat, then degree of economic damage to importing countries, which will mainly depend on the rapid oil import declinations. So oil export drop more quickly as compared to the production drops. ठीक है, जितना प्रोडक्शन कम उतना हमारा ऑयल एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, राइट, एंड विच इट विल बी ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू द डोमेस्टिक कंजप्शंस, खासतौर से एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए, एंड विद द रिजल्ट shortfalls of supply will cause extreme price rise. Inflations, right? What does inflation mean? General rise in price, sudden rise in price, constant rise in price is known as inflation. Unless demand is easy with the planned conservations measures. So this is how oil crisis is going to impact on the business. Okay, let us move with the other slide. एक एस्टिमेशन था कि प्रोडक्शन फोरकास्ट किया गया था जब ग्लोबल डिक्लाइनेशन हुआ था इन द ईयर 2020, और हाल ही के समय में भी ये रहता है. तो मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ बनता था ऑल्टरनेट के सोर्स पर कि इट ऑकर्स बिफोर ऑयल क्राइसिस बिगिंस, लाइफस्टाइल ऑफ ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस पूरा चेंज कर दिया जाए. ठीक है, सच मॉडल शोज द प्राइस ऑफ ऑयल एट एस्केलेटिंग एंड रिट्रीटिंग द फ्यूल एंड एनर्जी सोर्स, राइट, and the negative predictions for the future oil production occurs on analysis, then either the peak has been occurred or the global system. ठीक है, so production forecast global declinations by 2020 or the later part of this current century. We are in the 2023 right now, and it is being assumed that the major investments will be in the alternate sources. तो ऑयल क्राइसिस अगर बिगन होता है, जो हमारे में ऑलरेडी 80s और 90s में हो चुका था, ये कैसे हमने उसमें से बाहर निकले वो हम नेक्स्ट सेशंस में उसको कवर करेंगे. सो विदाउट रिक्वायरिंग द मेजर चेंजेस इन द लाइफस्टाइल कंज्यूमिंग नेशंस, ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस जो होता है वो, एंड सच काइंड ऑफ मॉडल विल लीड्स टू द प्राइस ऑफ ऑयल एट एस्केलेटिंग एंड द रिट्रीटिंग फ्यूल ऑयल एनर्जी सोर्सेज. नेगेटिव प्रेडिक्शंस था, या तो वो पीक पे रहेगा या तो वो डाउनवर्ड साइड जाएगा. ठीक है, विच ऑकर्स वेरी शॉर्टली. Proactive mitigations no longer be options available is predicted to global depressions. ठीक है, this will result into the chain reaction of various feedback mechanisms in the global market and the fall down of global industrial civilizations, potentially leading to the large population declines within a shorter period of time. तो यदि अगर वो shortages आती है, पीक रहता है, whatever is there, negative predictions होता है, but whatever will be there, it will be result for a shorter period of the time. During the crisis, so जब crisis आता है तब हमने क्या किया था? इंडिया के साथ दूसरे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, हमने फ्रेंडली रिलेशंस थे अरेबियन कंट्रीज के साथ, अरेबियन स्टेट्स के साथ, टू अचीव द फेवरेबल ट्रीटमेंट. अपना अच्छा दोस्त था, क्राइसिस था पूरे वर्ल्ड में, बट वो हमारा अच्छा दोस्त है तो हमको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिला था. ठीक है, हाउएवर ओपेक नेशंस ने एक इनएबिलिटी एक्सप्रेस की थी टू एडप्ट द ड्यूअल प्राइस सिस्टम, एंड इन द ईयर 1973 इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल था was around $414 million, and it was projected to go up around $1,350 million in the year 1974 within the gap of 1 year just because of price rise. Okay, and this was around 40% of its potential export earning, and it twice the amount of existing foreign exchange reserves. Other countries like the other South Asian oil importing states like Pakistan and Sri Lanka were also similarly affected. Right. So during the crisis वो UAE अपना अच्छा दोस्त था तो हमको इतना बेनिफिट थोड़ा बहुत मिला था. And what does the problems related to the water resources? After talking about the global environment, global warming and Kyoto Protocol,
how to reduce the greenhouse gases. We talked about the oil price crisis. Okay, and right now we are going to talk about the problems related to the water resource management. अब सिंपल सा सवाल है, पानी का ज़रूरत कहाँ नहीं होता है. ठीक है, presence and access of the fresh water is an very important or a vital determinant of the pattern of economic growth as well as social development. अपना डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ्रेश वाटर का होना बहुत ज़रूरी है. वी ऑल नो दैट. जैसे कहा कि भाई पानी की ज़रूरत कहाँ नहीं होती है. ठीक है, सो वाटर इज़ कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स for sustaining the economic development, not only in one particular sector but in fact in all the sector. Fresh water required in the input for the agriculture, required input for the industries and the mining, tourism sector, commercial and subsistence agriculture sector, fisheries and the livestock productions. So such kind of activity are a central part of livelihoods and the in fact human interest, as they provide employment and contribute to the national economic through the among other thing, and export will rise. Water does not only consider as an economic good but also it is a social goods. ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शंस और कंपनीज में उसका काम नहीं होता है, समाज में भी होता है, डेली रूटीन लाइफ में होता है, बेसिक नेसेसिटी में वाटर है. ठीक है, सेफ वाटर सप्लाई एंड एप्रोप्रिएट सैनिटेशंस आर द वेरी मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फॉर ए हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ. सो टू प्रोविजंस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी एस्पेशली फॉर द रूरल एरिया are expanding very rapidly. Urban populations can reduce the mortality rate related to the waterborne disease or water related diseases like cholera, diarrhea or malaria. So if you are getting a fresh drinking water or pure drinking water facilities, so ये सारे जो diseases है वो कम होते जाएंगे क्योंकि urban population day by day expand होता जा रहा है. Rural people are migrating to the urban areas. So availability of the pure drinking water and proper sanitation facilities will lead to the decrease in the waterborne disease like the cholera, diarrhea or malaria. And it is also being found that there are not enough water planning as lack of water awareness and the non-implementation of desired measure which create difficult to manage the situations. सबसे ज़्यादा पानी हम ही लोग वेस्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स. कैसे पानी वेस्ट करते? सिंपल सा है कि भाई सुबह उठ के अगर हम ब्रश करने के लिए जाते हैं तो वो नल चालू रखते. ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि दिवाली के टाइम पे पूरे घर की सफाई करने के पूरा पानी से सफाई करेंगे, फिर बोलेंगे मेरा फर्नीचर बिगड़ गया. पूरे घर में बाल्टी भरा हुआ पानी डाल देंगे, फिर उसको पूरा पोछेंगे और फिर कहेंगे कि मेरा फर्नीचर को वो अफेक्ट करता है. तब तो पानी डालेगा लकड़े के ऊपर तो वो लकड़ा ख़राब होगा ही होगा. राइट, अनवांटेड वाटर का यूज़ हम करते हैं. वाटर को स्टोरेज भी किया जा सकता है, ख़ास तौर से जब बारिश होती है टेरेस पे कुछ एक बाल्टी भर के रख सकते हैं, उसका पानी भी हम सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं. राइट, सो इट इज़ बीइंग फाउंड कि इफ़ वाटर प्लानिंग इज़ नॉट ए प्रॉपर और नॉट इनफ, तो लैक ऑफ वाटर अवेयरनेस एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ायर मेजर्स which creates it difficult to manage the situations, and this will result into the scarcity of the fresh water or availability of the pure drinking water facilities will not be there. Many parts in India are facing such kind of situations where people are not getting the pure drinking water facilities different types of the year. Such situation results in the natural factors as well as human actions. Widespread pollutions of surface water and the groundwater is being degraded the quality of the pure water resources. Right, majority of the people are using the groundwater, degrading the quality of the pure. क्षार वाला पानी कुछ विस्तार में आपको देखने को मिलेगा. Not having the proper drinking water facilities. So लोग क्या करते थे कि भी एक्वागार्ड रखते हैं, RO वाटर आता है. ठीक है, so people are not getting the pure drinking water and they are also may not having the adequate sanitation facilities, खास तौर से for the rural people. They are also migrating to the urban and the urban population get the expansions, and this reduces the mortality rate related to the waterborne diseases. So
नेचुरल फैक्टर्स है, नेचुरल रिसोर्स वाटर इज़ कंसिडर, ठीक है. सो इट इज़ अ ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द वाटर so that the pure drinking water facility can be easily get. अब प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं अपने वहाँ पर वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स का जो मेन रूट कॉज कहते हैं वो क्या है. सबसे पहला आता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. जितना पानी तुम्हारे कंट्री में अवेलेबल है एंड इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवेंचुअली, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस. वाटर पॉल्यूशन. अब वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है? सिंपल सा है कि आपके शहर में से, आपके गांव में से एक नदी निकल कर जा रहा है, पानी जा रहा है और उसमें हम कपड़े धोते हैं, कभी साबुन वाले पानी से अपने उसको वेस्ट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से भी वाटर के साथ कभी मर्ज होता है. उसके साथ साथ हम कुछ हमारे रिलीजियस चीज़ें होती है वो भी हम पानी में सीधा डाल देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है. कभी भारी बारिश होती है तो डैम से पानी का फ्लो रिवर में स्प्रेड किया जाता है या उसको फैलाया जाता है. वो मिट्टी में से पूरा आता है तो मिट्टी वाला पानी निकल कर आता है. सो वाटर पॉल्यूशंस के सोर्सेज ऐसे बहुत सारे हैं. हम कचरा कभी पानी में डाल देते हैं सीधा, ठीक है. रेनी सीज़न में या जब भारी बारिश होती है और पानी भर जाता है तो आपको दिखेगा बहुत सारा पॉल्यूटेड या कचरा वगैरह सब पानी में फ्लो के साथ साथ आपके पास भी वो आएगा. एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, बोरवेल पानी, राइट, एंड थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी एंड द वेटलैंड्स. These are the 4 root cause of the water related problems in India. Again I am repeating, root cause of water related problem in India. Number 1 is uneven distributions of water availability. Second is water pollution. Third one is excessive groundwater exploitations, and the fourth one is threat to the biodiversity, wetlands. ठीक है. अब इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूशंस में कौन कौन से? एयर, वाटर एंड नॉइस. अब इंडस्ट्रीज क्या है? तो कि भाई इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ वेरियस कंपनीज विच ऑपरेट द related set of varieties of the goods and services which are eventually sold to the consumers or purchasers. ठीक है. In any country, various industries work together to generate the required goods and services for the required people. नेसेसिटी लोग के लिए एक नेसेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, हर एक कंट्री में ये होता है. सो इंडस्ट्रीज क्या है कि भाई इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपनीज. इट इज़ ए इंडस्ट्रीज विच वर्क टुगेदर फॉर द वन पर्टिकुलर पर्पस ऑफ जनरेटिंग द नेसेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द नीडी पीपल. अब इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के? तो कि 3 प्रकार का. सबसे पहला है अपना प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड द थर्ड वन इज द टेरिटरी इंडस्ट्रीज. टर्शियरी, टेरिटरी, अलग अलग टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं. प्राइमरी में क्या आता है? तो इट यूजेस कलेक्शंस यूटिलाइजिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्स विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल प्रोसेस. सेकेंडरी में क्या आता है? तो कि इट मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस वेज एंड रिजल्ट्स इनटू टेंजिबल goods. Raw materials are being converted into one particular productions and this productions results into the goods and services. जैसे कि कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है. अब टेबल बाय किया है तो चेयर भी बाय करना पड़ेगा. These are the tangible goods. ठीक है. वो काम कौन करते हैं? तो कि इंडस्ट्रीज करती है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं कि वो कलेक्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, फिजिकल प्रोसेस में जाता है. एग्रीकल्चर सेक्टर्स को आप साथ में ले सकते हैं. टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या करती है? इट जनरेट सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल एंड द ग्रुप. बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंटरनेट फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज. these are the various tertiary industries. ठीक है. So there are 3 types of industries are being found in our country: primary, secondary एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी क्या करता है? तो कि वो कलेक्शंस करता है रॉ मटेरियल्स का, यूटिलाइज करता है, हार्वेस्टिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज करता है एंड विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल प्रोसेस. सेकेंडरी में क्या आता है? तो कि वो मैन्युफैक्चर करता है रॉ मटेरियल्स
and this raw materials is being converted into the various particular goods. Treasury क्या करता है तो कि it generate the various services for the individual and the group. So now how industry leads to the pollution. Pollution initially became the persistent problems industrial revolutions के time पर, and industries are being using the substitute hand of the laborers. ठीक है, फिजिकल काम नहीं करना है लेकिन मशीनरीज उसके बदले पर आ जाते हैं लेबर की बदले पर, तो लेबर चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए, आपको लेबर का स्किल चाहिए, उतना इंडस्ट्रियल प्रोसेस चाहिए, तो पावर जहाँ आता है नॉइज़ थोड़ा बहुत करता है वो नॉइज़ पॉल्यूशंस जाता है, रेल रोड्स यूज़ किया जाता है टू एक्सीलरेट पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स. लार्ज पॉल्यूटर कौन कौन से तो कि केमिकल यूज़ करने वाले, पेस्टिसाइड है, ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल, मेटल्स मेल्टिंग, आयरन, स्टील, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा are the large polluters, and it is being predicted that all the major user of energy produces large amount of waste products and that creates the pollutions के problems. And apart from this there are various industries having the less potential impact but highly problematic to the pollutions like textile industry, leather, paint, plastic, pharma companies, paper and pulp industries. So industries से pollutions कैसे फैलता है, not only air pollution but it also spread to the water pollution as well as is also generate the noise pollution. खास तौर से machines जो हम factories में चलाते हैं और उसका जो sound आता है, it creates the noise pollution, and noise pollution may lead to the problem of high blood pressures as well as hearing loss. अगर ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ सुन लिया गया तो वो आपको बहराश भी ला सकता है. So let us summarize after this slide. Different kind of pollutions की मैं बात करूँ तो air pollutions, water pollution, ठीक है. air pollutions कहाँ से आता है? main source of air pollutions are power generations, heat generations, burning solid waste, industrial process, transportations, vehicle से धुआं निकलता होता है, and it is being found that the 6 major type of pollutants like carbon monoxide, hydrocarbon, nitrogen oxides, particulates, sulfur oxides and photochemical oxidants are all the major source of air pollution, and air pollution is always there in the atmosphere which carries various substances in ample concentrations and can be put in danger the life of an human being. अपना लाइफ में अस्थमा जैसा डिसीज़ हो सकता है, उसके साथ कई सारे और डिसीज़ है जैसे स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है. लेट अस मूव विद द वाटर पॉल्यूशन. इट रिजल्ट्स इन द फ्रेश वाटर ऑफ केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल मटेरियल विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग के लिए ख़राब है, वैसे वाटर पॉल्यूशन तो उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है, ठीक है. कभी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि रेसिडेंशियल में इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर गलती से आगे अगर पाइप टूट जाता है या लीकेज कहीं पर होता है तो केमिकल वाला पानी सोसाइटी में आ चुका है, एंड दैट अफेक्ट द स्किन और ए लाइफ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. This results from the dissolving or suspending solid to the discharge of incidents, and the persistent toxic pollutants can be pesticides, heavy metals, non-degradable bioaccumulative and the chemical compounds. So there are this different kinds of pollution which is going to be spread from the industries as well. Let us summarize of the current sessions. In this unit we had talked about the various certain issues which related to the business law. मच मनी इज़ बीइंग इन्वॉल्व. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया, ग्रीन हाउस गैसेस किस हिसाब से काम करता है, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ इंटरनेशनली फर्स्ट ट्रीटी वॉज बीइंग साइंड बाय द 150 nations in Japan. It is a place in Japan, and somewhere in the year December 1997 we signed the Kyoto Protocol, and resulting the lower worldwide emission of the carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. In the view of certain observations, it is also believed that the dependence of the most modern industrial transport, agriculture, industrial system and the relative low cost, high availability of oil causes. We had also talked about the how industries leads to the pollutions, and there are several types of pollutions like water pollution, air pollution, land pollution, noise pollution, etc. So once again I would like to thank you all. Here we had completed with the unit 3 of block 2.
In the next session, we will be talking about the block 3, that is Indian Economic Development part 1 and the part 2. Once again, I am highly thankful to you all. Thank you very much.